आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह यूनुस में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। औलिया कराम अल्लाह ताला के वो प्यारे दोस्त होते हैं, ना दुनिया का कोई गम होता है ना कोई डर होता है। कहने का मतलब जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह ताला उसके हो जाते हैं। अल्लाह ताला की इस बात को जो औलिया कराम ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए सूफीज़्म दुनिया में अपनी मेहनत कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है अमेरिका में पले बड़े और यहाँ से बेंगलुरु के शहरी रहने वाले इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती फैजी साहब हमारे साथ, उमैर शरीफ फौजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि सूफीज़्म को ये दुनिया में किस तरह से प्रमोट करते हैं। सर, बेंगलुरु अखबार में आपका इस्तकबाल है। जब वर्ल्ड सूफी का आता है तो आज के 21st जनरेशन के यूथ में माइंड जाता है, म्यूजिक की तरफ जाता है कि सूफी म्यूजिक उस्ताद गुलाम अली खान की तरफ जाता है, नुसरत अली खान की तरफ जाता है, आबिदा खानम की तरफ जाता है, या ब्लैक टर्बन या ग्रीन या ऑरेंज इस तरह का जाता है। एक्चुअली इस्लाम की रोशनी में सूफी का क्या डेफिनेशन है और आप किस तरह से सूफी के जरिए अल्लाह की वहदानियत को दुनिया तक पहुंचाते हैं? सबसे पहली बात यह है कि सूफी का जो लफ्ज़ ना, इसी लफ्ज़ पे लोग अटके हुए हैं। हालांकि ये असल इस्लाम की चीज़ है कि आपने लफ्ज़ के तजावुज़ करके उस लफ्ज़ के पीछे जो हकीकत है उस तक पहुंचना है ना। उसका जो असल चीज़ है, लफ्ज़ के पीछे जो असलियत है उस तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें जो हम प्रमोट किया जाता है, प्रमोट तो खैर अच्छी लफ्ज़ नहीं है, चीज़ प्रमोट नहीं किया जाता है। ये अल्लाह का काम होता है कि दीन फैलाए। तो दीन फैलाना और अल्लाह की वहदानियत का पैगाम आगे देना, ये एक ही बात हुई। काम तो सिर्फ पैगाम फैलाना है। अब किस तरह से वो पैगाम फैलाया जाता है, वो हिकमत के साथ काम लिया जाता है। यूँ ही समझे कि यही है। Sir, in yesterday's local newspaper Daily Salar, an article has been published where an American person has spoken about a possible program, a human genocide that's going to happen in India through radicals on the people who follow Islam that advocates, propagates peace and harmony. What do you say on that? I say that anybody who is going to promote some kind of violent action has not carefully considered and does not have a careful study and background of the sacred texts of Islam. Okay. And therefore these people would be misguided in their efforts to try and inflict violence upon other people. There is an entire tradition within our deen that allows for people to speak to one another and resolve their differences. And if they do not resolve their differences, then you have certain things in place to make sure that there is at least absence of violence. Those things have to be followed. If those things are cast aside, then this is a misguided effort on the part of the people who are throwing it aside. So after the 9/11 that happened in New York, the world started seeing Muslims in a different perception. What is the mechanism through which we can convey the message to the people, the 200 million followers of Islam, or not everyone is a terrorist? First of all, I don't believe that this perception changed after 9/11. I believe that this perception was already there. It just became more widespread after 9/11. It became more in the eyes of people. And this was used, this incident was used to fan those flames and to make a new enemy for people to hate. And there was already hatred against Muslim people, and this was allowed to be further inflamed in other places. Okay. The goal should not be how do we show people. The goal should be how did we get to this place where we care about what it is that people are thinking. How do we get to a place where our actions are showing a completely different side? Okay. This is where we have to put our focus. Okay. Each person has an individual responsibility. If we always are looking at the global picture, we will always find problems. If you start with something small, but you do it with a lot of love, you do it with a lot of kindness and care, you do it for the sake of your creator,
you do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will place barakah in that. He will place His blessings and His increase in that thing. This is how change will happen. Okay, so in 21st century, if you're talking about the Asian subcontinent, still talking about women still is taboo here. Like compared to the US, men, women, everybody was like an equal. So जब 1400 साल पहले की अगर बात की जाए, जब इस्लाम की जंगें हुआ करती थी, तब भी औरतों का कंट्रीब्यूशन रहा ही है. तो इस्लाम की रोशनी में औरतों की क्या अहमियत? First of all, मैं ये नहीं मानता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज में औरत और मर्द के बीच में इक्वालिटी है. बिल्कुल नहीं मानता हूँ. अगर डे टू डे डेली लाइफ आप देखोगे, there's plenty of discrimination against women in the workforce, in regular life and everything. You have to see, instead of saying, what about this, what about that, you have to see what rights people have been given, and people need to actively ensure those rights for other people. Okay. Islam has afforded certain rights to humans. It's afforded certain rights to men, and it has afforded certain rights to women. The problem is we find so much conflict between the genders is because men are not fulfilling the rights that are due upon them. We are speaking, you and I are speaking as men. Cannot speak for women. We have to again start with ourselves. We have to, each person has to look at themselves and say, what rights are due upon me that I'm not being able to give? Right? And this is something that my Pir Murshid has said, this is a sabab for आज़ादी, for freedom. अगर ये पता चले कि रब का हम पर हक है और हम ये हक पूरी अता करने की कोशिश में लगें, तो फिर this is a sabab for our soul to become free, for our heart to have that peace of mind that we're looking for, that peace and stability. So instead of saying, okay, why is it like this, why is it like that, what happened historically, we can make all these points, we can make these arguments, there's a place for that. But more importantly, if you're asking me personally about this, then we have to see what rights are due upon us from our women, from our mothers, from our sisters, from our wives, from our daughters. We have to see what rights are due upon us, and we have to see, are we fulfilling those rights? Okay. Once we are fulfilling those rights, then we can see, okay, are the rights for us being fulfilled? Every person has to do that, whether it's a man, whether it's a woman. First, you have to see what those rights are. You have to fulfill them individually. Okay. So if you see in the last 50 to 60 years of time, as the technology is growing, the level of education, the quality of education, everything, more and more people are going to the schools getting. But if you see the standard of etiquettes of respecting the culture, the discipline, don't you think that standard is falling down across the world? Yes. I believe that the quality of education is definitely going down. And it has less to do with the standard that's being offered to us and what we as a society are choosing to place our emphasis on. Okay. We are choosing technical skills and technical vocations and calling those things education. But in our tradition, ilm, knowledge, has always been something that is supposed to transform the heart. Okay. If you are not finding this transformation, then you're not finding true education. Okay. There's one of the signs of the end times is that knowledge is lifted from the world. So what does it mean? It means the people of knowledge are being lifted from the world. And we saw this, especially in these last 2 years of the pandemic. Me personally, I read the news of many ulama passing away. So we have all of these things, we've got the technology. This doesn't mean that we have more education, it just means we have more information. Knowledge and information are not the same thing. Knowledge will allow you to use that information. Without knowledge, the information is useless, and that's what's happening. सर, आज के नौजवानों को अगर हम देखें तो फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोबाइल गैजेट्स में इस तरह बिजी हो गए हैं और नशीली चीज़ों में ज़्यादा मुब्तला हो गए हैं. तो उनके अखलाक भी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की यूथ को, लड़कों को, लड़कियों को, कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी का सही तरह से इस्तेमाल कर सकें? सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान को एक फितरत अता किया गया और वो फितरत आपके अंदर है, वो आवाज़ आपको कहेगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. और ये सिर्फ नौजवानों की बात नहीं है, ये हम पूरी मुआशरे की बात है कि हम इस बात को, इस आवाज़ को सुला देते हैं. ये हमारे पीर मुर्शिद का कहना है, फैज़ जी. तो हम इस आवाज़ को सुला देते हैं. तो सिर्फ नौजवानों के लिए बात नहीं है. देखें ना, हर कोई नौजवान के बारे में बात करते हैं, हालांकि नौजवानों की परवरिश कहाँ से होता है?
ये हम ही से होता है ना, तो इसका ये मतलब कि हमारा कसूर है कि नौजवान कहीं और जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि दीनदारी से दूर होना भी इसका इसकी एक वजह है? हमारी ही वजह से, हमारी कि हमने कुछ और इम्पोर्टेंस दिया। हमने इम्पोर्टेंस उनको लगाया कि आपने फॉर एग्जांपल करियर अच्छा लेना, अच्छे से शादी करना, अच्छा से स्कूल पे जाना, अच्छे से खाना खाना, हमने ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दी। अगर हमने पहले से लेड बाय एग्जाम्पल, कुछ कहने से ना, देखें कोई भी जवान से हो, कोई भी बच्चा हो, बच्ची हो, ये आपके कहने की बात जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप जो करते हैं वो देखेंगे जी। तो ये जो जनरेशन है ना, उन्होंने, हमने ये देखा कि हम कहते हैं कुछ और करते कुछ और। अच्छा, तो हम नौजवानों के लिए क्या पैगाम दे सकते हैं? हमने तो सिर्फ जो अल्फाज पे हैं, जो दिल पे हैं, वो जुबान पे होनी चाहिए। जो जुबान पे हैं वो बदन पे होनी चाहिए, आर्म्स एंड लेग्स, लिम्स पे होनी चाहिए। We have to bring these things from the heart to the limbs. If we are showing that we are doing everything that we say, then we can give the youth some kind of message. फिर जो नौजवान हमारी बात सुनेंगे। हमारी असली बात नहीं सुनते क्योंकि we're just saying one thing, doing something else. हमारे अपने आमाल और अपने अल्फाज को इकट्ठा करना है। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये थे इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती फैजी साहब, जो अमेरिका से इंडिया को 5 दिन के लिए टूर के लिए हैं, पूरा इंडिया ये ट्रैवल करने वाले हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, इनका ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम चैनल में हम आपको देंगे। किसी को भी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन, किसी सवाल इनसे करना हो वो पूछ सकते हैं। बखिया खबरों के लिए अब्दुल बेंगलुरु अखबार के साथ मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।